अमेज़न का पार्सल आया है मुझे, सीसीटीवी। पैकिंग टूट चुका है, ये पूरा इसमें निकला हुआ है पैकिंग, ये देखिए। बाकी ओवरऑल ठीक है। आई होप इससे कोई छेड़खानी ना हुआ हो। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। ये है Cpplus इंटेलिजेंट होम पीटी कैमरा विथ क्लाउड रिमोट विंग। तो 2020 रुपया है इसकी कीमत। ये है उसका पैकेट का भी ठीक है। तो इसमें MRP दिया हुआ है 2990 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ये सितंबर 21 में मैन्युफैक्चरिंग है, ये मेड इन इंडिया है। और चलिए इसको अभी देखते हैं। ये है कैमरा Cpplus। तो चलिए इसको अभी खोलते हैं। यस, यूज़र मैनुअल रहता ही है, तो कभी मैंने अब पढ़ा नहीं इसको और पढ़ूंगा भी नहीं। तो ये रहा हमारा कैमरा, उसको निकालते हैं, शायद इसमें अडेप्टर हो। ओके, इसमें पिन स्क्रूज दिया गया है और ये वॉल माउंट के लिए एडाप्टर, केबल, और ये रहा कैमरा। चल भाई, तो बाहर आ गया, तो इसको निकालते हैं अभी। वाह, काफ़ी क्यूट लग रहा है ये। तो चलिए इसको लगाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो चलिए इसको करते हैं टेस्ट। दिस इज एडाप्टर। Let's plug in, switch it on. We have to remove this flame. Now we need to download one app. We need to download this EasyCam app from Google Play Store. This EasyCam. Waiting for Wi-Fi connection. This EasyCam. So let us open this. I agree. Waiting for Wi-Fi connection. You need to sign up here. Let me sign through my email ID. You need to get a verification code. You need to set one password here. So let us set one password here. Now go to the app. Waiting for Wi-Fi. Now we need to add one camera Waiting here. for Wi-Fi connection. So smart camera, continue. We need to enter the model here. So this model is, the model here is this one, E21. So it's E20. So this is the model here. Let's just select this, add camera, next step, next. So allow access to allow, go to connect, go to connect. Now this is on the Wi-Fi here. Now you need to enter this code in front of the camera, so you need to show this like this. Waiting for Wi-Fi connection. Wi-Fi connection, please wait. आपको इसको Wi-Fi सामने connecting, please wait.
तो वाईफाई अभी कनेक्ट हो रहा है। इसको कैमरा के सामने लाना है आपको, तो कैमरा इसको डिटेक्ट करेगा। So the camera has turned on, and this is the navigation key. You can turn it left, right, up and down. So I am showing you right now. I am filming with this selfie tripod. You can see in the camera because the camera is in front of me. So here is one LAN port. You can connect to the LAN here, and the power on off button. So hope you like this video. If you like this video, please do like and subscribe and share it. Thank you. Bye bye.